Hello, my dear students. Success is not the key to happiness, but happiness is the key to success. If you love what you are doing, then you will be successful. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं एंड द टॉपिक इज जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। थ्योरी में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट? ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस इज वी विल बी डिफाइनिंग व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड जो हम लोग अप्रोच यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उस हिसाब से प्रॉब्लम्स के टाइप्स कितने हैं। सो लेट्स गो ऑन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स फर्स्ट एंड डू यू एग्री दैट हम लोग अगर प्रॉब्लम को डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से इट्स अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टीज दैट हैज टू बी रिजॉल्व्ड, राइट? एंड क्या है एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स के? सो प्रॉब्लम्स के एग्जांपल के रूप में डे टू डे प्रॉब्लम्स, study related problem, then we have business oriented problem, n number of things are there into the domain of the problem, but we are going to focus on the problems which needs to be solved by computer system. And if you want to use computer system for providing solution across the problem, हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो यहाँ पे अंडर द पीपीएस वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज वेरी फाइन। बट यहाँ पे पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नीड टू गो ऑन फॉलोइंग दोज स्टेप्स एंड उसके बाद बात करेंगे व्हाट आर द अप्रोचेस थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड उस हिसाब से प्रॉब्लम्स के टाइप्स कैसे आएंगे, राइट? सो लेट्स गो ऑन फाइंडिंग आउट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इस डायग्राम के हिसाब से सबसे पहला अप्रोच एंड सबसे पहला स्टेप इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, right? And once we go on identification of the problem, then the next phase comes as what? Understanding the problem in a more better way, then and then only we can provide solution to this, right? And जब हम लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की बात करेंगे तो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स दैट कम्स इनटू द पिक्चर। जिस प्रॉब्लम को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एज अ डिजाइनर, एज अ सॉल्वर, I must have that particular knowledge base. I must understand the subject in a deeper sense. I must have the enough communication with the client. एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं, हम लोगों को बैंकिंग सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाने हैं, राइट? सो उस केस में वी मस्ट हैव द बैंकिंग सेक्टर का नॉलेज बेस। We must go on understanding the subject in a more deeper sense, तभी हम लोग उसको डिजाइन कर पाएंगे एंड वी शुड हैव इनफ कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट कि वो क्लाइंट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है जिसके अगेंस्ट मुझे सॉल्यूशन देना है। So once I am able to understand the problem with the help of these entities in a more better sense, then only I can identify alternative approaches, alternative ways to reach to the solutions, right? And if I could be able to design the alternative approaches for reaching to the solution, then उसके बाद मुझे select करना पड़ेगा the best way to reach to the solution. So selecting the best way to solve the problems. And once we identified what is the best way for reaching out to the solution, then we need to go on list down the instructions to reach to the solution. And इसके बाद the next phase comes is evaluation of the solution. जो हम लोगों ने लिस्टिंग किया है उस हिसाब से सॉल्यूशन तक पहुंचने के बाद वी नीड टू गो ऑन इवैल्यूएटिंग कि ये सॉल्यूशन, हाँ, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अंडरस्टैंड किया है, उसके लिए बेटर है या नहीं, राइट? सो दीज आर द वेरी बेसिक 6 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन, देन अंडरस्टैंडिंग, finding out different ways, then selecting the best way, listing down all the instructions for solution, and then evaluation of the solutions, right? So ये approach से any problem irrespective of programming language we can go on what? Solving, right? Okay, now next step that we are going to discuss is
So the approach that we'll be using for solving the problem, उस हिसाब से हम लोग problems को type को define करेंगे, and there will be two types of the problem, one is algorithmic and the other one is heuristic. मतलब ऐसे problems जहां पे मैं solution provide करूंगा algorithmic approach से, and ऐसे कुछ problem जहां पे मैं solution provide करूंगा heuristic approach से. So let's get into more deeper sense कि algorithmic approach से solution provide करना मतलब क्या है. So उस केस में you could be able to find the solution in which the sequence or series of instructions or actions are fixed. उनको just execute करते जाओ, you will be reaching to one solution. And that is what the algorithmic approach जहां पे fixed set of instruction or fixed set of series or fixed set of steps है to reach out to what solutions, right? The word heuristic Greek origin का word है, it means to discover. उस केस में आपके लिए fixed set of instructions or fixed set of series of instructions are not there for reaching out to the solutions, right? So heuristic approach को define करने के लिए the solution in which direct set of steps cannot be applied, right? इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो चीजें बहुत आसान होंगी. फॉर एग्जांपल, आई हैव वन प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ कॉफी, making any recipe, right? Something like that, right? Do you agree that coffee making के लिए a fixed set of steps has to be carried out, and once you follow these steps you will be ending up with delicious coffee, right? But the another approach यहाँ पे ये प्रॉब्लम के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं, so playing a chess, does it have a fixed set of steps to follow? No. Depending on what the other player is playing, we need to go on working on trial and error basis. We need to go on discovering the alternative approaches to reach out what solution for winning conditions, right? So one is the problem where we need to go on working across algorithmic aspect of finding out solution, and ये problem में हम लोगों को चलना पड़ेगा what heuristic approach के साथ. So जब इनको टेक्निकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, so let us try to find out what are the differences between these two approaches. And in this case, when I want to go with definition wise, so it's a step by step procedure that guarantees a solution. आप उन steps को follow करो, you will be reaching to what solution. But in heuristic approach, हाँ, the rule of thumb approach that may not guarantee an optimal solution, trial and error basis, right? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट? बट सॉल्यूशन जरूर मिलेगा. बट यहां पे दिस इज मोर प्रिसाइज. इन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ, यू विल बी रीचिंग टू व्हाट एग्जैक्ट सॉल्यूशन, राइट? ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द डिटर्मिनिज्म, and definitely once we are able to find the algorithmic steps, that will be a deterministic approach. उन स्टेप्स को फॉलो करो, इट इज डिटरमाइंड दैट you are going to reach to the exact solution. But ये जो approach है, heuristic approach, it is always non-deterministic. यहाँ पे बहुत जनरलाइज वे से आप सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पे बहुत प्रिसाइज वे इज डिफाइंड टू रीच आउट व्हाट टू द सॉल्यूशन, राइट? ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. एंड डेफिनेटली computationally this particular entity is more expensive, more complex, as to make something more precise, more accurate, right? More step by step, right? Definitely it is a complex process, and in this case this will be non-deterministic approach है. ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए नहीं चल रहे, so this is less resource intensive and what simpler approach, right? Okay, next to that, when we talked about accuracy, this is perfect accurate solution, but that is not always what accurate solution. हाँ, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं विथ विच अप्रोच? ह्यूरिस्टिक अप्रोच, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, एग्जांपल्स के केस में अभी टेक्निकल एग्जांपल देने जा रहा हूं. जब आप डेटा स्ट्रक्चर में चलोगे तो डिक्स्ट्रस करके एल्गोरिदम है जो आपको ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है. उस केस में इस एल्गोरिदम के स्टेप्स को फॉलो करो, यू विल बी एबल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ विद इन दैट ग्राफ. सो ये एक एग्जांपल के रूप में हम लोग देख रहे हैं एल्गोरिथमिक अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच. फाइंडिंग आउट नियरेस्ट नेबर इन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, राइट? सो
Depending on the time complexity, depending on the neighbors and depending on the nodes to be visited, you have to keep on running across trial and error approach कि ये neighbor से अगर मैं travel कर रहा हूं तो will I be able to reach to the destination in proper timing. So वो approach है heuristic solution, right? Traveling cells one problem. Next to that, implementation. This is often more structured and what formal in design क्योंकि इसके लिए fixed predefined steps है and that is more flexible, relying on intuition as well as what experience. And the last one is applicability, suitable for the problems with clear and well defined solutions. Problem is very clean and clear जिसके लिए हम लोग step design कर पा रहे हैं to reach out to what solution, and this is suitable for the problems with not known efficient extra solution, right? So these are the differences between what algorithmic approach and heuristic approach for reaching out to what solutions. So इस सेशन में हम लोगों ने डिफाइन किया प्रॉब्लम्स को, different steps of solving the problem and the approaches that we will be using for solving the problem, and उसके हिसाब से two types of the problems, one is algorithmic domain and the other one is heuristic domain, right? So that's it from my side about this session. थ्योरी में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, सो बहुत ध्यान से इसको देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं ताकि दैट कैन हेल्प यू टू राइट द आंसर्स, राइट? सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.